Hello students, today we are going to start the chapter 3 of history. The name is Nationalism in India. Dear students, first of all we should know what is nationalism. Nationalism means feeling of love, respect for one's nation. किसी का भी अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए रिस्पेक्ट होना ही नेशनलिज्म कहलाता है. Indian independence movement started because of the many forces, because of the many factors. Indian people of different group, different religion, different caste, different culture, they were oppressed. They were suppressed by the British people. So this feeling of oppression bind these people together and create the feeling of nationalism among the Indians. Now, the thing is that how First World War created a new political and economic situation in India. इंडिया में किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को बर्थ किया, को क्रिएट किया. दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर increase the war expenditure. So British government introduced income taxes, custom duties were raised, prices of essential goods were increased during the war period. There was a shortage of soldiers in the war. That's why rural people were called to become soldier. And forced recruitment. Recruitment means appointment. Forced recruitment was made to the British Indian Army, and it created the problem among the Indian farmers and Indian villagers. They were not ready to go for army, but forced recruitment caused widespread anger among them. As men went on battle, then crops failure created because no one was there to look after the crops. And due to crop failure, there was a shortage of food. So due to shortage of food, prices increase. ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. आजकल भी आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह से थिंग्स आर नॉट अवेलेबल एज दे वर अवेलेबल अर्लियर. सो प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड. कोई भी सामान जो आज हम खरीदते हैं वो पहले उतना महंगा नहीं था जितना इस लॉकडाउन के सिचुएशन में है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट शोज दैट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ थिंग्स विच इंक्रीजेज द प्राइस. और जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो पुअर पीपल उन चीज़ों को खरीद नहीं पाते जो महंगी हो जाती हैं. और ऐसा ही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में. क्रॉप फेल होने की वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई, प्राइसेस इंक्रीज हो गए और पुअर पीपल वर नॉट एबल टू फेस द हार्डशिप एट दैट टाइम. सो parts of India, million of people lost their life due to famine and epidemic. भुखमरी की वजह से, महामारी की वजह से million of people, you will be surprised to know that 12 to 13 million people, Indian people, they die during this time period. Indian participated in First World War with the hope that their hardship would end after the war, but it did not happen. As you can see, this is the scene of Indian soldiers during the First World War, and First World War broke out in 1914. ये सोचा गया था कि एक्सपेक्ट किया गया था कि दिसंबर तक, क्रिसमस तक, अगस्त में स्टार्ट हुई थी ये 6 अगस्त को, और ये सोचा गया था कि दिसंबर में क्रिसमस तक ये वार ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बट इट गो लॉन्ग फॉर 1918. सो द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज 1914 to 1918.